वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फाइनल फैंटेसी 16। सो लास्ट सेशन में हमने देखा क्लाइव, सिड और जिल ड्रेक सेट तक पहुंचते हैं और फिर वहां से स्नीकिंग करके मदर किस्टर के हार्ट तक पहुंचते हैं और फिर सिड अपने आइकन को अवेकन करके मदर किस्टर को डिस्ट्रॉय करता है। पर इसी दौरान सिड इंजर्ड हो जाता है और अपनी सारी पावर्स जो है क्लाइव को देके मर जाता है। उसके बाद देखते हैं हम इन सब पे एक वेव्स का अटैक होता है और उसके बाद सब बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो हुडेड पर्सन है वो निकल के आता है और वो अल्टीमा को पुकारता है। जब अल्टीमा बाहर आता है तो अल्टीमा उसको फिनिक्स करके कहता है, तो हमें समझ में आता है कि वो हुडेड पर्सन और कोई नहीं बल्कि जोशुआ ही है, जिसको हम ऑलरेडी समझ रहे थे। फिर जोशुआ अल्टीमा को कहता है कि अपने ट्रैवल्स के दौरान उसने उसके बारे में जाना है और उसको उसके मोटिव के बारे में पता है और उसको ये भी पता है कि वो उसके भाई की पावर्स में इंटरेस्टेड है। फिर अल्टीमा उसको बोलता है कि हाँ, वो अपना मैसेज देने के लिए आया है और वो और कोई नहीं बल्कि क्लाइव की बॉडी है। तो फिर जोशुआ उसको ट्रिक करके अपने में ट्रैप कर देता है क्योंकि उसको पता है कि वो उसको कोई हार्म नहीं पहुंचा पाएगा और फिर वो उसको बोलता है अब तुम मेरे भाई को हार्म करके दिखाओ। और इसी दौरान हम देखते हैं कि क्लाइव को थोड़ा देर के होश आता है, वो जोशुआ की एक झलक देखता है और फिर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाइडअवे में अटैक होता है। ये लोग सिड की तलाश में होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सिड ने ही बेनेडिक्टा को मारा है और इस अटैक के दौरान बहुत से बेयरर्स जो वहाँ छुपे होते हैं वो भी मारे जाते हैं। और इसके बाद 5 इयर्स का टाइम जंप होता है और हम देखते हैं क्लाइव को ही न्यू सिड के नाम से जाना जाता है और क्लाइव जो है सिड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं गेम में आगे क्या होता है। सो लेट्स बिगिन। चलो आ जाओ। यस, तो 5 साल बाद क्लाइव जो है सिड की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है। गए काम से। यस, सो अच्छा लग रहा है कहानी जो आगे बढ़ रही है। क्लाइव ओह और आते जा रहे हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, कोई बात नहीं, काम आ जाओ सब लोग। फाइनली गॉन ना, आ जाओ भाई, आते ही जा रहे। Let him play with the kitten. They brought a pet. ये कौन है भाई? लेपर्ड जैसा लग रहा है, कैट का बड़ा रूप। इसको सब सिट मार रहे हैं। We'll have to be faster. Faster. Okay, all right. Let's start. Panther है ये। भाई बहुत ताकत है, पर जाने वाला है। डोंट वरी। क्या फाइनली, अबे कूद रहा है मेरे ऊपर। पैंथर, पैंथर अंकल कौन? फाइनली पैंथर स्विंग। सो क्लाइव में सिड की भी पावर्स हैं, गेरुडा की भी पावर्स हैं और डोमिनेंट ऑफ फायर तो है ही है वो, इफ्रिट। सो कई लोगों के पास हैं।
तो सही है ना, वो ऑलरेडी वैसे भी स्ट्रांग था और ये सबके बाद तो और भी स्ट्रांग हो गया, और अच्छी भी बात है, और ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है, लोगों की भलाई के लिए कर रहा है, तो इट्स गुड। पावरफुल भी है और लोगों की भलाई भी कर रहा है, तो अच्छी बात है। Let them. There's been more than enough bloodshed for one day. ओ ये सारे वो आ गए ना, इनको हेल्प हो गई ना, सारे बियरर्स है ना, की हालत खराब कर रखी है इन लोगों ने। क्या हो गया? What happened? Murderer. All of our friends are dead because of you. Huh? Do you hear Are they? me? They used us as bait. Bait to lure you out of your stinking hole, all because you couldn't just let things be. What are you even doing here? We never asked to be saved. Did you think we'd thank you? They'll never forgive us. We're all marked now. ओह, अब इनके सब पीछे पड़ जाएंगे ना, इसके कारण सबको पता चल गया कि For बेल्स 5 यहाँ। years we fought to secure a better life for our kind. To see that we are treated as equals. Do you not want that? सही कह रही है। Is to be left alone. Every time you show your faces, it is we who suffer. वही कह रहे हैं ना, इनके कारण लोगों को मालूम पड़ जाता है बियरर्स यहाँ पे है और फिर इन पे अटैक करते हैं। वही कह रहे हैं ये लोग, बट ये लोग तो उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो रास्ता ये लोग निकालेंगे ना, क्राइम कुछ तो करेगा इनके लिए। देखते हैं क्या करता है अब इनके लिए। Just leave us be. This is our home, and this is where we'll stay. अब ये सारे लोग आ रहे हैं ना, बेरस पे अटैक कर रहे हैं और सब क्राइम को दोषी ठहरा रहे हैं, इसके कारण ही इनको सबको मालूम पड़ेगा कि बेरस यहाँ पे है। They'll come round. If you say so. We should go. सो मैप में देख लेती हूँ मैं अभी। सिट द आउटलॉ, रिटर्न टू द हाइडवे। अभी यहाँ पे क्लाइव ऑजल, सो हाइडवे जाते हैं अब हम ट्रैवल करके। लेट्स मूव बैक टू हाइडवे। तो ये स्टोरी अच्छा है जो आगे आगे मूव हो रही है। ओह बिनो मेरे स्टोरी, वाओ क्या जगह, क्या Died सीन 5 है। years ago. We destroyed what for many was a symbol of hope. For a reason they'll never know. We cannot blame them for thinking us the cause of their misery. Though it's to give them a better tomorrow, they see only that we've made their lives harder today. सोच रहा है ना बियरस के लिए ये लोग चिंता Well करते must हैं, be lanced if it is to heal. बट मुझे अच्छा लगता है कि I can't स्टोरी help अच्छा but मूव wonder कर if we've रही made है। the right choice. एंड ऐसा नहीं कि एक ही चीज में स्टकअप हो रहे हैं, एक ही स्टोरी में खींच रहे हैं। Free to choose our own path. सो अब देखते हैं, अभी भी उन्होंने सबके लिए सिचुएशन ठीक नहीं करी है, Honestly don't तो think it कैसे ये और mattered ठीक if that करते हैं choice हम लोगों was के लिए ना, बियरस right के or लिए। wrong. Only that it was our own. I कुछ miss तो him. करेंगे ना ये लोग बियरस के लिए। A world where we can live and die as equals. That's what he wanted. What we want. And that's why I bear his name. It's why we've सिड all को याद chosen कर रहा है to ना, bear सिड his इतना सही legacy. बंदा था ना, एक्चुअली मुझे बहुत पसंद था। वो जब मरा I'm ना not तो going to let anything बहुत ही stand in इमोशनल our way. मोमेंट था। Right Anyways. over, lovebirds. Home. अब वो जो sweet चाहता है वो क्राइव करेगा, मतलब करने का ट्राई कर रहा है। वो काम इतना आसान नहीं है। वाह कितनी सुंदर जगह है ना, मतलब ये जो व्यू है, एक तो इसकी लोकेशंस भी बहुत अच्छे हैं, स्टोरी भी अच्छे से मूव करती है, और मुझे साउंड ट्रैक तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और जब फाइट होती है तो अलग अलग टाइप के एनिमीज आते हैं, कलर्स, इफेक्ट्स, अच्छा लगता है।
Home sweet home. Otto was asking This after is you. Hideaway homes. Let's go and see Home him. sweet home लिखा भी है. Never a dull moment. ऑटो से बात करते हैं भाई हम. Welcome back, Sid. Finish with that log. Look, it's Sid. सब इसको सेट सेट बोल रहे हैं ना. सेट का ही घर था ना, ये सीडी इनको यहाँ पे लेकर आया था ना एक्चुअली. There you are, Clive. अब चलो Word of इसने तो your क्लाइव बोला. adventures arrived this morning. Victor sends his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming with us. No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. गैव कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन उनको दे गई. Understood. गैव भी बहुत If anyone कमाल needs का me, I'll बंदा be है in the भाई. map room. अब कुछ ना कुछ ये प्लानिंग तो करेंगे. देखते हैं स्टोरी आगे Still कैसे can't work अनफोल्ड that one होती है. There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. Otto, speak with Otto. Speak with Vivian in the map room. ठीक है भाई, इससे बात करते हैं. I'd trust I'm not intruding. Back from Smart your mission. lady. I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone. One might say the same of you, Vivian Ninetails. I'll have you know that only 4 attempts have been made on my life, and none was especially memorable. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? हाँ, चलो सही क्वेश्चन तो कर रही है. देखते हैं अब क्या होता है. कितना सुंदर मैप लग रहा है यार. वाओ. Recent days have seen the blight wrest ever more land from her grasp. Okay. For which ठीक है. reason she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambraquois boots. Little Yeah, सही wonder बता then रहे that हैं, Sylvester Spencer. set his sights on the crystalline dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. क्या सही स्टोरी बताई है Certainly, ना. there is no better place to stage an army. From there, कैसे कैसे वेंचर the Holy किया है, अपना Empire's एम्पायर reach बढ़ाया. spans the twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply. एक्चुअली in वही ना, kind. स्टार्वेशन की बात है तो अपना ट्रीटी वीटी सब ब्रेक ही करेंगे, लोगों का सोचेंगे. The Dalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Yaran. यार Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? तो वही है ना, वॉर हो रहा है, सब लैंड को कैप्चर करने के लिए कर रहे हैं, ट्रीटी रिलेशनशिप सब तोड़ रहे हैं, बिकॉज स्टार्वेशन से बचना है. Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed, I am confident she will remain. Okay. Now, as to the matter of payment for today's lesson,
Complete a simple errand for me, and we shall consider ourselves even. Even. Right. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was adequate. I suppose it wouldn't hurt to visit our resident historian. Speak with the hypocrites in the shell. कितना सही है ना उसका होम स्वीट होम 5 साल में मतलब कितना डिफरेंट इसका चेंज हो गया ना ये सब व्यू हमने पहले नहीं देखा था सो चीज़ें बदल रही हैं कितना वो दिखाया ना उसने अभी मैप में कितने वॉर हुए सब इधर उधर कैप्चर कर रहे हैं ये रीज़न है तो बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं 5 साल में Lawsman Harpocrates. Harpocrates. Now that is a name I have not heard for a long time. पूरा ना So long, in fact. I have half ये तो forgotten बहुत सही था mine. कि भाई मैं अपना नाम ही भूल Welcome गया home, Clive. You were missed. चलो यहाँ पे सब इसको क्लाइव जानते हैं I believe क्लाइव this बोल रहे हैं ना belongs to अच्छा you. लग रहा है Vivian asked me to return it. हैंड ओवर कर देते हैं इसको Ready? Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same. But alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence, either in words or tarts. और इन चार्ट That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. But without access to the great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to उतना find ज़्यादा हेल्प little नहीं कर and पाएगा ना less. कि वो उसके बारे में I am ज़्यादा नहीं sorry. जानता है Please. कह रहा है कि Don't apologize. I'll send word to our associates. See if they can't furnish you with more books. सही है ना इसको और सारा बुक दे देंगे वो रिसर्च करके फिर बता देगा उसको गाइड करेगा Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old historian. So अभी Time to go filching Cooper nuts, though. Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. सो अभी स्टोरी कितनी चेंज हो गई ना इट्स लाइक मतलब Twins seem well. अच्छा लग रहा है Aye. Yet they laugh far too little for one so young. The loss of their parents weighs heavy on them, ओहो however well they hide it. Titan took much from us that night, ओहो from some more than others, and the wounds that remain. They are बता not रहा ना कि ये सब हुआ था टाइटन ने सब Which is ड्रामे why we करे must थे give them उसके all the साथ time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Good day. बहुत अच्छा लग रहा है मतलब स्टोरी जो है बहुत आगे अच्छा मूव कर रही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत चीजें हैं I should get some rest while I can. आप रेस्ट करने जा रहे हैं मतलब ऐसा लग रहा है रिटर्न टू योर चैम्बर्स सो अब लग रहा है कि स्टोरी बहुत अच्छे से आगे बहुत चीजें हैं जिसमें आगे आगे आएगा मैप्स में हम देख रहे हैं बातें करके समझ में आ रहा है Not back a blink and कि you're आगे अब already बहुत सी off चीजें आने solving वाली हैं everyone's problems. तो मजा आने वाला And है it's good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. And it's all thanks to you, Talia. The चल scowl यार did most of the work. Before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. चलो भाई गेव ने क्या संदेशा भेजा है All right. I'll have a कुछ look. ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और हेल्प करता है हमेशा सो देखते हैं उसके बाद रेस्ट कर मतलब मस्त है मुझे अच्छा लग रहा है अब स्टोरी अच्छा खासा खुलने वाली है A letter. न्यू मिसिव हैज बीन डिलीवर्ड टू क्लाइव चैम्बर्स तो अब वो गेव का लेटर पड़ेगा देखते हैं क्या है उसमें रीडिंग यस तो वही कह रहा है कि कुछ तो मतलब बड़ा होने वाला है What does Gav उसको have to हिंट दे say? दिया है The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kupka's charge.
With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance. The one we've been waiting for. Yes, correct. इस तो रिपब्लिकन आर्मी है, बहुत कुछ होने वाला है इसमें आगे जाके, वो आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कैप्चर करने के लिए। Here, our friends, the Hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 5 साल में बहुत सारी चीजें हो गई If I भाई। could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. कोशिश तो कर रहा है ना। Exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. सही बात है ना। In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. कम नहीं है क्रिस्टल। And now, देने सादा दे now देते they हैं rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. ये भी बहुत पॉजिटिव है, अच्छे से इसको गाइड करती है एक्चुअली। क्लाइव भी थोड़ा सा वो रहता है ना, परेशान सा रहता है, बहुत सी चीजें होती हैं। We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. सही बात है। वही कह रहे हैं, जोशुआ ने सेकंड चांस दिया है, तो उसको सब वेस्ट मत करो, कह रही है, मोटिवेट कर रही है। गुड, ये समझ गया ना जोशुआ था। सही, वही कह रहे हैं। हाँ, सुना इसने ना, मतलब उस समय ये हल्का सा बेहोश हो गया था फिर ये देख के, करेक्ट, ये सीन देख के, बट उसको समझ में आया वो जोशुआ ही था जिसने उसको सेकंड चांस दिया। If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. करेक्ट। अच्छा है ना, जोशुआ वो भी कुछ करेगा, कहीं अलग मोड़ में ही मिलेंगे कहानी में आगे जाके। He will. And we must be ready when he does. चलो भाई, वो सब तो ठीक है, अभी तो ड्रिंक एंजॉय कर लो। परेशान मत हो, थोड़ा अपना लोड और बर्डन कम करो। रिलैक्स योरसेल्फ विदाउट मदर क्रिस्टल्स। गुड, क्या सही होती है इन लोग में। जो सिड के नाम पे। गुड, मुझे सिड बहुत अच्छा लगता था, और ये लोग भी उसके मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो चाहता था वो सब पूरा कर रहे हैं एक्चुअली मिलके। जिल का भी कैरेक्टर अच्छा है एक्चुअली। The northern territories. And so the north is lost. I knew that the blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far, far worse than any could have imagined. वही है ना, ब्लाइट पूरा सब खराब कर दे दिया। Before the twins are no more. तभी पूरा मदर क्रिस्टल्स को जड़ से हटाना, वो कहते हैं ना वर्ल्ड विदाउट मदर क्रिस्टल्स, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। World marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother. जोशुआ भी अच्छा काम कर रहा है एक्चुअली। तो जोशुआ भी अच्छा है ना, इसका भी अपना, वाओ क्या व्यू है, ये भी अपने काम पूरे कर रहा है ना, ये ऑल्सो मतलब सोच रहा है लोगों की भलाई के लिए। सो उधर क्लाइव भी अच्छा काम कर रहा है, अच्छी बात है। My apologies, I didn't mean to. क्या हुआ, कुछ तो अर्जेंट हुआ है, गड़बड़? Not at all. We were just बोलो भाई, discussing strategy. क्या बोलना, क्या खबर लाए हो? It's Martha. Otto. From the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you ओह, finish. मार्था मिसिंग है? क्यों भाई, क्या हो गया?
तो अब ये जाके देखेगा ना क्या हुआ मार्था को भाई। द गैदरिंग स्टॉर्म, यस। What would make Martha leave the rest? अब वो मार्था को ढूंढने जाएगा ना क्या हुआ, कुछ तो अब स्टोरी चलेगी, कुछ तो मिस्ट्री होगी ना, कहाँ गायब हो गई मार्था। चलो भाई 5 साल बाद हम उस जगह को भी जाके देखते हैं वो कैसी दिखती है। पहले हम गए थे ना मार्था की जगह पे, अब वहीं जाएगा, ऑटो से बात करेगा। ये रहा ऑटो। What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. ओह अच्छा, इंपीरियल वाले लोग बहुत ही बदमाश हैं। The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. मार्था को क्या हुआ पता नहीं भाई। Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip around the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. But now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. सबको घर सेफली रहेगा। चलो भाई अब ये जाएगा फाइंड द कर्स ब्रेकर्स, तो जाएगा सबको ठीक ठाक करके रहेगा ना वापस। मार्था को भी देखेगा क्या हुआ एक्चुअली। सो अभी मैं मैप को अपडेट करके फिर आगे बढ़ती हूँ। सो मार्थास रेस्ट यहाँ पे हम जाएंगे और पहले देखते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पे हुआ क्या है और मार्था कहाँ गायब हो गई है। चलो भाई 5 साल बाद हम वापस से उस जगह पे जाएंगे। Come on. We need to find the others. I'm sorry, Sid. We were too late. The Imperials have already left. We're best off staying where we are for now, I reckon. Let's get you to a physical. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials descended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. अच्छा, Sorrowwise To Bay. the Abbey, sheltering Martha's bearers. The bastards. Jed and I will go after them. You take care of the people here. We will. चलो भाई चलते हैं। But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. अच्छा। I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. Don't worry भाई। क्लाइव सब काम कर देगा। डार्क क्राउड्स के तरह क्लाइव सब ठीक कर देगा। अभी आ गया है ना। चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं। Cole is right. Make for That was great no Mount tavern Abbey. brawl. It was a message. Pursue the That's a garrison culling. soldiers. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. वही कह रहे हैं ना, ऊपर वालों का डिसीजन होगा ये सब काम करने का, तभी जाके ये लोग ऐसे कर रहे हैं। चलो भाई देखते हैं कहाँ गए ये लोग और मार्था को कहाँ लेके गए या क्या हुआ उसके साथ। Let's see. अगर बचा सकते तो बचा रहे हैं। आई एम होपिंग कि उसको हम सेव कर पाए बिकॉज शी वॉज अ स्मार्ट रेडी। सो अदरवाइज ना वहाँ पे जा रहे हैं। तो मैं मैप को देखते हुए आगे बढ़ती हूँ। Up ahead. अरे ये नहीं मारता, वो इंजर्ड है। Are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you.
You have to do something. Oh. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? Black Shield का क्या हुआ भाई? Bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were going to hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the imperials. Distracted them long enough for me to get away. Oh. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. Oh. I think so. Thank you, Clive. Thank you, Clive. Oh, अच्छा. तो वही कह रही है ना उनको जाके बचाने के लिए. Map for the dark crowds scattered. Pursue the garrison soldiers. Fought to defend all her citizens. It seems a step too far, even for the Empire. It seems okay. Wow. ये सही है बीच बीच में, पर इनसे निपटने की जरूरत नहीं है. बीच के रास्ते से जाएंगे तो ये लोग हमें हार्म नहीं करेंगे शायद. एनिमीज का ये जोन दिख रहा है रेड सा. ओह बीस एरियल स्ट्राइक. कोई ना. अच्छा बहुत सारे क्रैब्स वैब्स भी आ गए हैं. ग्रूम विडो. ऑलराइट. इनको मारने में मजा आता है यार. एक दो बार में ही मर जाते हैं बेचारे. टॉगर भी मस्त फाइट कर रहा है. गुड टॉगर, कीप इट अप. अब कौन आ रहा है? अच्छा यस. पता है उस फाइट में मुझे ऐसा लगता है टॉगर ना मर गया हो लास्ट टाइम जो हुई थी ना वहाँ पे मदर क्रिस्टल में. आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट टॉगर इज अलाइव. उसको कुछ नहीं हुआ. बट यार सेट गया. बहुत बुरा लगता है. एनीवेज कोई नहीं भाई. चलो फिर कहीं से एनिमीज आने वाले हैं. कंटिन्यू टू ग्रेडमॉन्ड एबी. चलो भाई. Are we too late? There might still be someone inside. चलो भाई फाइनली हम यहाँ एबी में आ गए हैं. ओहो ये वो है ना जो सारे हमने देखा था ऑलरेडी 5 साल पहले. ये स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ना ये लोग. और इनका वो केयर टेकर था उस टाइम पे हम मिले थे. बट इनको मतलब एक्चुअली कोई भी केयर भी नहीं कर पाया. अच्छा भाई ये लोग यहाँ हैं. चलो भाई अब इनकी बचाते हैं. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offence. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long.
Is that all of them? I think so. I didn't see the abbot. He may still be alive. The abbot. The bearers died protecting him, calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cullings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Matt to beg Sid's aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Sid! Where are you? Sid! In here! We found a survivor! Clive. He's gone. We've laid the abbot to rest, but the bearers, they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix Jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials.
मैन चलो भाई कितना डिफरेंट साइड यार ये अब उससे अटैक करो Get him! कैसे इसका अटैक करूँ भाई अबे रुक जा थोड़ा डिफेंड करने का टाइम और मौका तो दे फाइनली जाने वाला है भाई क्या सही अटैक कर रहा है यार ये भी मुझसे मजा आ रहा है एक्चुअली चलो भाई फाइनली नोटोरियस मार्क्समैन ये भी गया सही था यार मस्त वाले अटैक कर रहा था ये मेरे पे You didn't see that coming. चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ यो लेट्स मूव और अपने काम को खत्म करके वापस आते हैं यस ये ब्रिज होगा इस पे हमको आना था करेक्ट यस फाइनली स्कैटर रिमेन्स So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. सारे काम निपटा रहे हैं ना हाँ सही बात है What of the imperials? Empire was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. हाँ चलो भाई वापस चलते हैं और माता से मिलते हैं Return to Martha says let's go back to Martha
सो ये वाला भी काम तो क्लाइव सारे अच्छे काम निपटा रहा है, सबकी मदद कर रहा है, जो भी पेंडिंग काम है वो कर रहा है, लोगों से फाइट कर रहा है, लोगों की जानें भी बचाने का ट्राई कर रहा है. इट्स गुड. सो अब हम मार्था के पास जाते हैं. मार्था भी इंजर्ड थी उस टाइम पे. तब देखते हैं हाउ इज शी. किधर भी कोई ना. कितना सही लग रहा है ना, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि एग्जिट है. Thank you, founder. बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा है कि हाँ भाई कुछ गेम का नहीं लग रहा है, सब कुछ रियल का है. ये पहले के ज़माने में ऐसा होता था ना. सब कुछ वुड का होता था स्ट्रक्चर. लिफ्ट देखो जरा इतनी बड़ी है इनकी उस समय. तो यहाँ पे आ गए हम. लोग बातें कर रहे हैं. मार्केट प्लेस है एज यूजुअल. सो फाइनली हम मार्था की प्लेस में आ गए हैं. ओहो सब इंजर्ड है यार. ये रही मार्था. No one survived then. I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. Yep, इसको गिल्ट हो रहा है ना. इसको लग रहा है इसके कारण कि जाने गई एक्चुअली. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these black shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. Unpicking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those imperials think they can come in here again, बहुत ही बेकार है यार threaten my imperials. people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? मार्था की चिंता कर रहे हैं ना. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. सही है. काफी स्ट्रॉन्ग लेडी है भाई ये मार्था एक्चुअली. ये इंपीरियल्स ने सबके नाक में दम करके रखा है एक्चुअली. Return to the hideaway. So friends, आज का सेशन यही एंड करते हैं. So hope you like this video, and if you like this video then like, share and subscribe to my channel. This is me Abhinita signing off.